अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर टेक्निकल अहमद यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्चुअल डेटा रूम वीडीआर डेफिनेशंस, यूजेस एंड अल्टरनेटिव टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल अहमद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो पे हम लोग टारगेट एम रखेंगे लाइक्स का 20 के लाइक्स, तो लाजमी से कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ वर्चुअल What is a virtual data rooms? Virtual data rooms (VDRs), also known as a deals rooms, is a secure online repository for document storage and distributions. It is typically utilized during the due dialogues diligence process, presenting a merge or accusations to review shares and disclose company documentations। ये कॉपी कर लेते हैं, बाद में काम आ सकता है। तो चलें नेक्स्ट पे चल जाते हैं। की टेक अवे: virtual data rooms or VDRs exist as a secure way to store documents that multiple people need access to simultaneously. VDRs are commonly used by business when they are working on the project or other joint ventures that requires access to shared data. VDRs are considered more secure than physical documents as there is no risk of loss during transit or being destroyed accidentally. Generally, actions like copying, printings, and forwardings are disabled in VDRs. Understanding virtual data rooms: virtual data rooms have increasingly replaced physical data rooms traditionally used to disclose and share documents. With the globalizations of business and increased security scrutiny, to reduce cost, virtual data rooms are an attractive alternative to physical data rooms. Virtual data rooms are widely accessible, immediately available, and more secure. As security concerns grow and accidents-based breaches increase, VDR providers are developing more and reliable database intelligent public offering OPOS operations and partnerships or other business that must work jointly, and information will use virtual data rooms. Uses of virtual data rooms: merge and accusations M&A. अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है। Producers are the most common use of VDRs as these responsible repositories provides a place of the due diligence needed during the finalization यार ये बोला नहीं जा रहा वर्ड पे of the deal. These business transactions involve large amounts of documents, many of which are confidential and contain sensitive information. Uses of VDR is a safe and reliable way for all interested parties to review and exchange documents as they engage in negotiations. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कर
लाजमी से बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड आपने हमें इसको गैस करके बताना है कि हम नेक्स्ट टॉपिक किस से रिलेटेड बनाएं। तो आज की वीडियो बतनी थी अगर, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।